हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? आर यू फाइन? आप सब ठीक हो? गुड। सो लेट्स स्टडी। चलो पढ़ें। सो टुडेज लेक्चर फॉर क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट इंग्लिश, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 3 and today's topic is revision of sound of A. So today we will revise sound of A. आज हम किसका रिवीजन करेंगे? साउंड ऑफ ए का। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 5. सो बिफोर स्टार्टिंग न्यू लेक्चर लेट्स रिवाइज प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट. ओके, सो हम अपने नए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपने प्रीवियस लेक्चर का एक बार रिवीजन करेंगे. सो लेट्स सी. This is our previous lecture. In our previous lecture, we have done revision of sound of A in a activity way. हमने अपने previous lecture में sound of A का revision किया था. किस वे से? Activity way से. So let's see. We have joined C with AT to make a word. हमने C को AT के साथ join किया था word बनाने के लिए. तो हमारा कौन सा word बना था? CAT. Cat. Then we join M with AT to make mat. MAT, mat. Mat means chotai. Then we join R with AT to make rat. RAT, rat. Rat means chuha. Again CAT, cat. Cat means billy. MAT, mat. Mat means chotai. RAT, rat. Rat means chuha. So now let's see second one. In this we join these word with this. हमने इन words को इसके साथ join किया था to make a word बनाने के लिए. Okay. So let's see. If we join M with AN, then we will make man. MAN, man. Man means आदमी. If we join R with AN, then ran. RAN, ran. Ran means दौड़ना. If you join F with AN, which word will become? Fan. FAN, fan. Fan means पंखा. Again MAN, man. Man means आदमी. RAN, ran. Ran means दौड़ना. FAN, fan. Fan means पंखा. Okay. Now we will start a न्यू लेक्चर. अब हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे. एंड आई हैव गिवन दिस वर्क फॉर 2 days. मैंने आपको ये होमवर्क दिया था 2 दिन के लिए. आई होप यू हैव डन इट. आपने कर लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू लेक्चर. सो इन टूडेज लेक्चर वी विल रिवाइज साउंड ऑफ ए इन अ एक्टिविटी वे एज वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर. जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था ऐसे ही हम दोबारा से उसी एक्टिविटी को दोहराएंगे. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग यू हैव टू राइट फॉर्मेट फर्स्ट. आपको पहले अपना फॉर्मेट लिखना है. एंड फॉर्मेट यू हैव टू राइट योरसेल्फ. ओके. आपको फॉर्मेट खुद लिखना है. प्लीज अपने पेरेंट्स से नहीं लिखवाना है, अदरवाइज आपको लिखना नहीं आएगा बेटा. राइट डाउन डेट, DATE, DATE, date. Then put dash on second line. Date means दिनांक and dash you have to write in second line. आपको dash second line पे ही लगाना है. Okay. Now in second line, okay, here you have to write down date. यहाँ पे आपको अपनी date लिखनी है. And this side you have to write down capital C dot W. C means class, W means work. Class, work. कक्षा, कार्य. Now in second line write down day. And every letter you have to start from corner. आपको corner से ही start करना है. Okay. Not from this side. इस side से start नहीं करना है, आपको यही से start करना है. Now DAY, day.
Day means दिन. DAY, day. Again you have to put dash. यहाँ पे आपको dash लगाना है second line पे. Here you have to write down day. यहाँ पे आपको अपना दिन लिखना है. Okay. Now in next line, today what we are doing, आज हम क्या कर रहे हैं, revision. So you have to write down revision. यहाँ पे आपको अपना revision लिखना है. Capital R E V I S I O N, revision. REVISION, revision. Revision means दोहराई. ठीक है. Now in today we will join these letter with this box. ठीक है. आज हम इन लेटर को इससे ज्वाइन करेंगे टू मेक अ वर्ड बनाने के लिए. ओके. इफ यू ज्वाइन सी विद AP, देन वर्ड विल बिकम, कौन सा वर्ड बनेगा? ओके. फर्स्ट वी विल राइट C, देन वी विल राइट A and P. CAP. CAP, cap. Cap means topi. CAP, cap. Now let's see second. In second box T is written. If you join T with AP, which word will become? कौन सा word बनेगा? We will write TAP. Tap. TAP, tap. Tap means null. Tap means null. Now next one. If you join M with AP, which word will become? कौन सा word बनेगा? Write down M, then A, then P. MAP, map. MAP, map. Map means नक्शा. Map means नक्शा. Now we will do second one. Now in second one we will join these letter with this box. अब हम इन letters को इस box के साथ join करेंगे to make a word. Okay, word बनाने के लिए. So let's see. If we join D with AD, which word will become? कौन सा word बनेगा? So first we will write D, then A, then D. DAD, dad. DAD, dad. Dad means papa. Dad means papa. Now next one. If we join S with AD, which word will come? कौन सा word बनेगा? Write down S, then A, then D. SAD, sad. SAD, sad. Sad means दुखी होना. Sad means दुखी होना. Now next, if we join B with AD, which word will become? कौन सा word बनेगा? Write down B, then A, then D. Bad. BAD, bad. Bad means ganda. Bad means ganda. Now we will write our homework. Write down capital H dot W. H means home. W means work. Home, work. Grah, कार्य. Now put dash. Write down capital L E A R N. Learn. Now put slash. Learn means आपको ये सारे spellings learn करनी है. Then write down rewrite. R E W R I T E. Rewrite. Rewrite means आपको यही वर्क दोबारा करना है. Then leave some space. थोड़ी सी जगह छोड़नी है. Write down THE. D. Now again you have to leave some space. थोड़ी सी जगह छोड़नी है. Write down capital C dot W. Now in second line, write down twice.
मीन्स दिस वर्क इज फॉर 2 days. यह वर्क 2 दिन का है. You have to do class work, homework, and again you have to repeat the same. ठीक है. TWICE twice. Okay. फर्स्ट डे आपको क्लास वर्क एंड होमवर्क दोनों करना है एंड सेम डे यू हैव टू रिपीट अगेन. ठीक है. सेम अगले दिन भी आपको सेम ऐसे रिपीट करना है क्लास वर्क एंड होमवर्क. ओके. एंड यू हैव टू डू योर वर्क इन गुड हैंड राइटिंग. आपको बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में करना है बेटा. एंड यू हैव टू डू योर वर्क रेगुलरली. आपको डेली अपना होमवर्क करना है एंड यू हैव टू डू योर सेल्फ. आपको खुद करना है. ओके. प्लीज अपने पेरेंट्स से नहीं करवाना बेटा. सो अगेन वी विल रीड इट. एक बार हम पढ़ लेते हैं इन्हें. इफ यू ज्वाइन सी विद AP, देन विच वर्ड विल बिकम कैप. CAP, कैप. Cap means topi. If you join T with AP, then what will become? Tap. TAP, tap. Tap means null. M. If you join M with AP, then what will become? Map. MAP, map. Map means naksha. Now in second one, if you join D with AD, which word will become? Dad. DAD, dad. Dad means Papa. If you join S with AD, then what will become? Sad. Sad means दुखी होना. SAD, sad. Then if you join B with AD, then what will become? Bad. BAD, bad. Bad means गंदा. So please learn all these spellings. सारी आपको spellings learn करनी है. Okay. So if you like this video, please press like and subscribe this channel. Thank you.